Hello students, now let us study new topic, relative atomic mass. Again, very important topic, relative atomic mass. Relative atomic mass. After the launch of Dalton's atomic theory, it became clear that matter is made of smallest indivisible particle called atom. Now, after Dalton's atomic theory, the next work was to determine the atomic mass of an atom. It was very difficult because an atom is very small. Atom is invisible to the eyes. Atoms cannot be isolated. So because of these reasons, it was very, very difficult to determine the actual mass of an atom. तो आप सोच रहे होंगे, अगर हम सम क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट ले लें और उसको डिवाइड कर दें विद द नंबर ऑफ एटम्स इन दैट क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट, इससे तो हमें एक एटम का मास मिल जाएगा. बट एट दैट टाइम देयर वाज नो मेथड टू count number of atoms in the given quantity of a substance. So उस समय एक एटम का एटॉमिक मास हम इस तरह फाइंड आउट नहीं कर सकते थे कि एक एलिमेंट का कुछ क्वांटिटी लिया, उसका मास ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया with the number of atoms present in that quantity of substance. लेकिन इसके लिए number of atoms count करना पड़ते, and at that time there was no method to count number of atoms. So it was very difficult to find out the absolute mass, actual mass of an एटम. तो एटम का एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस वाज अप्लाइड. तो स्टूडेंट, व्हाट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस under similar conditions of temperature and pressure contain equal volumes. This is Avogadro's hypothesis, which we studied in our last lecture. तो अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस यूज करके हाउ द मास ऑफ एन एटम वाज determined in the beginning. According to this Avogadro's hypothesis, equal volumes of two different gases. Let us suppose we take two different gases under similar conditions of temperature and pressure, और हम उन डिफरेंट गैसेस के मास को मेजर करेंगे.
Let us suppose take two different gases, equal volumes of two different gases at similar temperature and pressure, and let us measure their mass. According to Avogadro, the ratio of their masses will be equal to ratio of their single molecule. I repeat, according to Avogadro's hypothesis, if equal volume of two different gases are taken under similar conditions of temperature and pressure, then the ratio of their masses will be equal to ratio of their single molecule. Let us explain this by taking an example. तो स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. हमारे पास लेट अस सपोज टू गैसेस हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. This is all according to Avogadro's hypothesis. We have two different gases at same temperature and pressure. And these two different gases are, let us suppose, hydrogen and oxygen. We will take equal volumes of hydrogen and oxygen under similar conditions of temperature and pressure. Let us find out their mass ratio. हाइड्रोजन का मास यहां पे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली 2:32. ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है स्टूडेंट, तो 16 मल्टीप्लाई टू 32. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1:16. So I mean to say that hydrogen and oxygen, these are the two gases which are being taken at equal volumes at similar temperature and pressure according to Avogadro's hypothesis. Then the ratio of mass of these two gases will be 1:16. Then according to Avogadro's hypothesis, one molecule of oxygen, student यहां पे देखिएगा, one molecule of oxygen, O2 is the molecule of oxygen, will be 16 times heavier than one molecule of the hydrogen. तो अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाए, we can say that one molecule of oxygen is 16 times heavier than one molecule of hydrogen. Let's understand this in terms of atoms. तो मैं होप करता हूं आपने अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली ये जो हमने टू डिफरेंट गैसेस एट सिमिलर टेंपरेचर एंड प्रेशर ली हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इक्वल वॉल्यूम्स हैं, इनका मास रेशियो 2:16, दैट इज 1:16. दिस सिंपली मींस दैट one molecule of oxygen is 16 times heavier than one molecule of hydrogen. But students, one molecule of oxygen has two atoms. देख लीजिए, one molecule of oxygen has two atoms and one molecule of hydrogen also has two atoms. Meaning, one molecule of hydrogen and one molecule of oxygen both have same number of atoms. How many? Two. तो इससे क्या मीनिंग निकलता है कि if one molecule of oxygen is 16 times heavier than one molecule of hydrogen, क्योंकि दोनों के पास एटम्स का नंबर भी इक्वल है, इट मींस दैट one atom of oxygen is 16 times heavier than one atom of hydrogen. इस तरह से एटॉमिक मासेस को कंपेयर किया गया. तो स्टूडेंट यहां से कंक्लूजन क्या निकला? इस वेरी अर्लियर इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन क्या निकला कि सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 times heavier than single atom of hydrogen.
ये जो एटॉमिक मासेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिगिनिंग में फाइंड आउट किए गए, दे वर नॉट द एक्चुअल मासेस। ये एक्चुअल मासेस नहीं है। These are actually called as the relative atomic masses। क्यों? क्योंकि इन्हीं इंफॉर्मेशन से स्टूडेंट क्या किया गया, हाइड्रोजन को कंसीडर किया गया एक रेफरेंस एलिमेंट। व्हाट इज रेफरेंस एलिमेंट? एक ऐसा एलिमेंट जिसका मास अब फिक्स किया गया 1, और इसी हाइड्रोजन एटम से बाकी एलिमेंट के एटम के मासेस को कंपेयर करके उनके मासेस को फाइंड आउट किया जाना था। सो नाउ हाइड्रोजन वाज टेकन एज रेफरेंस एलिमेंट हुज मास वाज फिक्स्ड एट 1। ये स्टूडेंट यहां पे 1, और आप ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, और इसका मास फिक्स कर दिया गया 1। एंड इफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन इज 1, अकॉर्डिंग टू Avogadro's hypothesis, since an atom of oxygen is 16 times heavier than an atom of hydrogen, और अगर हाइड्रोजन का मास 1 ले लेते हैं, then ultimately the mass of oxygen will be 16। These were not the actual masses। यहां पे मास को फाइंड आउट किया गया है by comparing it with the mass of an atom of hydrogen। तो इस तरह बिगिनिंग में क्या किया गया, हाइड्रोजन को कंसीडर किया गया रेफरेंस एलिमेंट, इसके मास को फिक्स किया गया एट 1, और अदर एलिमेंट्स जिनके मासेस फाइंड आउट किए करने होते, उन अदर एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। एंड इन दिस वे द एटॉमिक मासेस of other elements were determined in the beginning। These were not the actual masses, these were the relative atomic masses। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। So in the beginning, by considering hydrogen as the reference element, the atomic masses of other elements were determined। But by doing so, the atomic masses of several elements came out to be fractional। हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट जब कंसीडर किया गया एंड अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट किया गया, by doing so many elements के atomic masses fractional मिलने लगे। and it is always little bit tough to understand fractional terms। that's why scientists shifted from hydrogen as reference element to oxygen as reference element। अब साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को लीव किया और ऑक्सीजन 16 को रेफरेंस एलिमेंट कंसीडर किया, और अब अदर एलिमेंट के एटॉमिक मासेस फाइंड आउट किए जाने लगे बाय कंपेयरिंग देयर एटॉमिक मासेस विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन 16। बट अगेन ऑक्सीजन हैज 3 isotopes, oxygen 16, oxygen 17 and oxygen 18। फिर से डाउट क्रिएट हुआ, साइंटिस्ट को तीनों आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास लेना पड़ा, और इन तीनों ऑक्सीजन के आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास was found to be 16.0044। 16.0044 ऑक्सीजन के तीनों आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास। अगेन फिगर केम आउट टू बी फ्रैक्शनल, एंड वी स्टडीड थोड़ा
मुश्किल होता है फ्रैक्शनल टर्म्स को अंडरस्टैंड करना. सो नाउ साइंटिस्ट shifted from oxygen 16 as reference element to carbon 12, an atom of carbon element whose mass is fixed at 12. तो इस तरह आज फाइनली रेफरेंस एलिमेंट विच हैज बीन सेलेक्टेड for the determination of atomic masses is an atom of carbon element whose mass is fixed at 12. तो इस तरह जिस भी एटम का एटॉमिक मास डिटरमाइन करना होता है उस एटम के मास को कंपेयर किया जाता है, रिलेट किया जाता है विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12. और इस तरह आज की स्टडीज में एटम्स के एटॉमिक मासेस को फाइंड आउट किया जाता है. अगेन दीज आर नॉट द एब्सोल्यूट मासेस, मीन्स दे आर नॉट द एक्चुअल मासेस ऑफ एन एटम. In this case, the mass of an atom is being compared with the mass of an atom of carbon 12. So these masses are called as relative atomic masses. They are not the absolute atomic masses. So on the basis of this, relative atomic mass is defined as. So students, now look at the board. Atomic mass कैसे डिफाइन किया जाएगा? Atomic mass of an element is the number of times an atom of that element is heavier than an atom of carbon element taken as 12. Carbon element taken as 12 means that atom of carbon whose mass was fixed at 12. I repeat, atomic mass of an element is the number of times an atom of that element is heavier than an atom of carbon element taken as 12. This is the latest definition of relative atomic mass. According to this definition, relative atomic mass is the mass of an element. It is the mass of an element. देखो स्टूडेंट, mass of an element. How many times an element is heavier than an atom of carbon 12? That is actually called as the relative atomic mass. तो इस तरह एटम्स के मासिस को कार्बन 12 के मास से कंपेयर किया जाने लगा और हमें एटम्स के एटॉमिक मासिस मिले. बाय दिस वे द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वाज फाउंड टू बी 1.008. आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं. जब हाइड्रोजन एटम को, इसके मास को कार्बन 12 एटम के मास से कंपेयर किया गया, द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वाज फाउंड टू बी 1.008 AMU. Similarly, then the mass of an atom of oxygen is compared with mass of an atom of carbon 12. The relative atomic mass of oxygen atom comes to be 16 AMU. I mean to say that nowadays any element whose atomic mass is to be measured, the mass of that element
is compared with the mass of an atom of carbon 12. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट. All these masses are measured by using a scale. All these masses are measured by using a scale, and that scale is called as atomic mass scale. I repeat, atomic mass scale, which is also known as unified mass scale. Relative atomic masses are measured by using a scale, and that scale is called as atomic mass scale, which is also called as unified mass scale. And these relative atomic masses are expressed in atomic mass units, AMU, or U, just U, unified mass. आज आप किसी का भी एटॉमिक मास ले लें. If you say that the atomic mass of oxygen is 16, it is 16 AMU or U. सो हमने आपसे कहा कि relative atomic masses को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज किया जाता है, that is a atomic mass scale, and that atomic mass scale nowadays is also known as yes, unified scale, and the relative atomic masses are measured in terms of atomic mass unit or U. And what will be the value of 1 AMU, 1 atomic mass unit? Let's see on the board. ध्यान देना स्टूडेंट्स, बोर नहीं करना चाहिए. यहां ध्यान दीजिए, मेरे इस पॉइंट के ऊपर देखिएगा. atomic masses are measured in the atomic mass scale or unified scale. Atomic mass scale को modern science में we call it unified scale. And atomic masses, these relative atomic masses are expressed in terms of atomic mass unit or U. U means unified mass. तो हम आपसे बात ये कर रहे हैं कि atomic mass scale पे the value of 1 AMU is taken equal to 1/12 the mass of an atom of carbon taken as 12. क्या कहने की कोशिश की मैंने? क्या अंडरस्टैंड किया स्टूडेंट आपने? मैं यही आपसे पूछ रहा हूं. The value of 1 AMU, the value of 1 AMU on this scale is equal to mass. The value of 1 AMU on this scale is equal to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12. तो बोर्ड पे देखिएगा, 1 atomic mass unit 1 AMU is equal to 1/12. The 1/12 करेंगे, 1/12 the mass of an atom of carbon 12. होप करता हूं आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे स्टूडेंट. The latest reference element being used is carbon, whose mass is taken as 12. Atomic mass scale is used. Relative atomic masses are determined on this scale in terms of AMU or U. And the value of 1 AMU is 1/12 the mass of an atom of carbon 12. तो अब किस तरह से relative atomic masses फाइंड आउट किए जाएंगे? याद रखना है स्टूडेंट किस तरह से. Suppose I have to determine the relative atomic mass of hydrogen. किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा? 1 atom of hydrogen. स्टूडेंट यहां पे देखिएगा सभी, थोड़ा सा यहां पे फोकस करते हैं. यहां पे देखिएगा, यहां पे इधर देखिएगा स्टूडेंट सभी. यहां इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. और आप यहां पे देखिएगा स्टूडेंट, इधर मेरी तरफ यहां देखना जरूरी है. Thus determine the relative atomic mass of hydrogen. ये हमको डिटरमाइन करना है.
an atom of hydrogen is, यहां 1.008. An atom of hydrogen is 1.008 times heavier. किससे? Than 1/12. स्टूडेंट यहां फिर से फोकस करें, वैल्यू ऑफ 1 AMU कितना है? दैट इज 1/12. वैल्यू ऑफ 1 AMU दैट इज 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. इसका मीनिंग जिस एटम का हमको फाइंड आउट करना है एटॉमिक मास, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट स्केल पे एन एटम जो है वो कितना टाइम हैवियर है देन 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. स्टूडेंट ये 1/12 कहां से आ गया? मैं ये बता रहा हूं क्योंकि एटॉमिक मास स्केल पे 1 AMU का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन atom of carbon 12. That's why it is studied that how many times an atom of an element is heavier than 1/12 the mass of an atom of carbon 12. और जितना भी टाइम्स आपको एक एटम हैवियर मिलेगा देन 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, वही उस एटम का होगा रिलेटिव एटॉमिक मास. जैसे एटॉमिक मास स्केल पे वी फाइंड दैट सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12. तो स्टूडेंट्स को हम किस तरह से लेंगे? एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज, तो मैं इसको इस तरह से लूंगा स्टूडेंट. यहां देखना है सभी को, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एटॉमिक मास स्केल पे कितना टाइम्स हैवियर है मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन? 1.008. किससे? देन द वैल्यू ऑफ 1 AMU. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU? यहां पे एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 टाइम्स हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन. तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.008 इंटू 1/12 इंटू 12. कुछ समझ पाया ये सब कैसे आया? व्हाट इज दिस? ये फिगर हमें इंडिकेट कर रही है कि एन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक मास स्केल पे कितना टाइम्स हैवियर है. ये फिगर हमें ये बता किससे हैवियर है? 1/12 ऑफ कार्बन 12. स्टूडेंट ये 1/12 इंटू 12 कहां से आ गया? क्योंकि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. सो 1.008 क्या फिगर है? ये इंडिकेट करता है एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना टाइम हैवियर है. किससे? 1/12 से. किसका 1/12? 1/12 ऑफ कार्बन 12. So when you multiply this 1008 into 1/12 into 12, the answer comes to be 1.008. और इसके साथ इधर यूज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट्स AMU. AMU मींस एटॉमिक मास यूनिट. 9th क्लास में पढ़ा स्टूडेंट. आर सिंपली U. एटॉमिक मास के यूनिट हम U भी यूज करते हैं और मैं होप करता हूं कि U का मीनिंग आपको मालूम होगा क्या है. दैट इज यूनिफाइड मास. सो द relative atomic mass of hydrogen is 1.008 U. तो क्या इंडिकेट करता है relative atomic mass? ये सिंपली इतना इंडिकेट करता है how many times an atom of an element is heavier than 1/12 the mass of an atom of carbon 12.
तो इसी तरह स्टूडेंट हमने ये कुछ बोर्ड पे लिख के रखा था. फॉर एग्जाम्पल, relative atomic mass of hydrogen is 1.008 AMU, means that a single atom of hydrogen is 1.008 times heavier than 1/12 the mass of an atom of carbon 12. तो यहां मैंने फाइंड आउट किया था relative atomic mass of hydrogen is equal to 1.008. स्टूडेंट ये फिगर कहां से आ गई? 1.008 कहां से इसका जन्म हो गया? ये फिगर इंडिकेट कर रही है कि एक एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने टाइम्स हैवियर है? किससे? 1/12 ऑफ कार्बन 12. आंसर इज 1.008 AMU. कम टू दिस साइड. relative atomic mass of oxygen is 16 AMU. How can we say that the relative atomic mass of an atom of oxygen is 60 AMU? Because when we compare the mass of an atom of oxygen with the atom of carbon 12, what we find? We find that an atom of oxygen is 16 times heavier than 1/12 of carbon 12. An atom of oxygen is 16 times heavier than 1/12 of carbon 12. That's why the relative atomic mass of oxygen is 16 AMU or 16 U. U means unified mass. अगर आज मैं आपसे ये कहता हूं the relative atomic mass of sodium is, let us suppose, 93. Sorry. The relative atomic mass of sodium is, let us suppose, 23. What does it mean? क्या मीनिंग होगा स्टूडेंट इसका? क्या इंडिकेट करता है रिलेटिव एटॉमिक मास का डेफिनेशन? इसका मतलब ये होगा कि सिंगल एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हैवियर देन 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. तो यहां मैं इस डेफिनेशन को कंक्लूड करता हूं. रिलेटिव एटॉमिक मास simply indicates that how many times an element is heavier than 1/12 of an atom of carbon 12. और होप करता हूं आपको ये पता चला होगा कि 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 कहां से ओरिजिनेट हो गया. हमने तो कार्बन 12 लिया था because atomic mass scale पे value of 1 AMU is equal to 1/12 the mass of an atom of carbon 12. तो ये छोटा सा कंसेप्ट था relative atomic mass का. And student, now we will study. और इससे पहले कि हम आगे जाएं, आप याद रखना कि nowadays relative atomic mass very accurately measure करने के लिए we have an instrument, and that instrument is called as spectrometer. That instrument is called as spectrometer. So now let us come to the concept of average atomic mass. Very simple. Average relative atomic mass. You know what are isotopes? Isotopes are the elements whose atoms have different atomic masses. In case of elements having number of isotopes, the concept of average atomic mass is used. For example, what is the relative atomic mass of chlorine? We have two isotopes of chlorine. One has atomic mass of 35 and other has atomic mass of 37. So when we use scientific calculations, what will be the atomic mass of chlorine used by us in these scientific calculations? Because it has two isotopes and both have different atomic masses. So in such cases, in case of isotopes where एक ही एलिमेंट
डिफरेंट एटॉमिक मासेस शो करता है, ऐसे केस में एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, हम उन सभी आइसोटोप्स का एवरेज मास लेते हैं। स्टूडेंट, कुछ आइडिया लगा? द कंसेप्ट ऑफ एवरेज atomic mass, average relative atomic mass is used only and only in case of isotopes where एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं they have different atomic masses, and in that case हमें उन डिफरेंट आइसोटोप्स जो हैं, एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मासेस यूज नहीं करने हैं, हम उनका एवरेज एटॉमिक मास लेंगे। और एक एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं, उन सभी आइसोटोप्स का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा, दैट विल बी द एवरेज relative atomic mass. Look at the board. Average atomic mass, it is defined as the average of relative atomic masses of all the isotopes of an element. आगे वही स्टूडेंट से compared with the mass of an atom of carbon 12. होप करता हूं आप कर सकते हैं इसको खुद। एलिमेंट है, नंबर ऑफ आइसोटोप्स हैं, उस एलिमेंट के सभी आइसोटोप्स के डिफरेंट डिफरेंट हैं एटॉमिक मासेस, सो हमें एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट लेना होगा। इन दैट केस द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट, दैट विल बी द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो स्टूडेंट, ये एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ आइसोटोप्स, और ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? अगेन लेट्स टेक वन एग्जांपल। सब यहां देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हैं which are frequently asked in the exams. मैंने इस एग्जाम्पल को कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की फॉर्म में आपके सामने रख रहा हूं, छोटी मोटी। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। साथ में हमें दिया गया है द अबंडेंस रेशियो ऑफ इट्स टू आइसोटोप्स। वी हैव टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, Cl35, टॉप पे जो लिखा है ये एटॉमिक मास है, क्लोरीन 35, the atom of chlorine whose atomic mass is 35 and chlorine 37. The abundance ratio in दोनों isotopes का है 3:1. We have two isotopes of chlorine. One has a mass of 35 and other has a mass of 37. And दोनों का हमें abundance ratio बताया गया है कि नेचर के अंदर दे अकर इन दी रेशियो ऑफ 3:1। हमें क्लोरीन का फाइंड आउट करना है एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास। कैसे? ये थोड़ा सा हटकर है जो मैथमेटिकल एवरेज आप फाइंड आउट करते हैं। फार्मूला आपके सामने है बोर्ड पे। एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टूडेंट आप एक आइसोटोप का एटॉमिक मास लेंगे। हमारे पास तो ओनली 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है। फर्स्ट आइसोटोप जो क्लोरीन का है, इट्स एटॉमिक मास इज 35। मल्टीप्लाई दिस एटॉमिक मास बाय इट्स अबंडेंस रेशियो। तो जो क्लोरीन का आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 35 है, उसका अबंडेंस रेशियो हमारे पास 3 है। सो 35 इज द एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप ऑफ द क्लोरीन, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, जाने की उसकी अबंडेंस रेशियो से। देन पुट द साइन ऑफ प्लस डाला हमने। एंड नाउ सेम टेक्निक इज अप्लाइड टू द अदर आइसोटोप ऑफ द क्लोरीन। सेकंड आइसोटोप ऑफ द क्लोरीन इज 37, सो वी हैव 37। इस आइसोटोप का अबंडेंस रेशियो 1, सो 37 इज मल्टीप्लाइड बाई 1। अगर हमारे पास थर्ड आइसोटोप भी होता तो फिर हम यहां पे आगे प्लस का साइन डालते, थर्ड आइसोटोप का एटॉमिक मास लेते और उसको मल्टीप्लाई करते उसकी अबंडेंस रेशियो से। तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे किससे?
सम टोटल ऑफ अबंडेंस रेशियो से 3:1 दोनों का सम टोटल ले लेना 3+1। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे द आंसर विल बी 35.5 U। U मींस यूनिफाइड मास, आप AMU भी लिख सकते हैं। सो व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? इट्स नॉट 35, इट्स नॉट 37, it is 35.5. Now let us determine average atomic mass of boron. आपको खुद करना है, मैं थोड़ा सा हेल्प करके छोड़ूंगा। Let us determine the average atomic mass of boron. We have two isotopes of boron, B10 and B11. Student, we have two isotopes of boron, B10 and B11, और उनका अबंडेंस रेशियो हमें यहां परसेंटेज में दिया गया है, परेशान ना हो। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन whose two isotopes B10 and B11 are found 20% and 80% respectively. तो स्टूडेंट बोरान के जो दो आइसोटोप हैं B10 and B11, उनका अबंडेंस रेशियो हमें दिया गया है 20% and 80% वो नेचर में अकर कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द अबंडेंस रेशियो? 20% and 80%, दैट विल बी 1:4। मैं होप करता हूं कि आप इनका एवरेज एटॉमिक मास खुद निकाल लेंगे। कैसे? अगर मैं बड़ी रैपर भी बोलूंगा, खुद कर लीजिएगा। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन विल बी इक्वल टू, एक आइसोटोप लेना है बोरॉन का, लेट अस से B10, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसकी अबंडेंस रेशियो से, प्लस करना है एटॉमिक मास ऑफ अदर आइसोटोप ऑफ बोरॉन दैट इज 11, उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी अबंडेंस रेशियो से दैट इज 4, और सारे को डिवाइड कर देना है सम ऑफ द अबंडेंस रेशियो से 1+4, और जो भी आंसर आएगा वो आप फाइंड आउट करेंगे और मुझे अपना आंसर सेंड करेंगे। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। होप करता हूं आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट कहां से आ गया। ये आज जितने भी हम एटॉमिक मासेस लेते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, दीज आर नॉट द एक्चुअल एटॉमिक मासेस, दीज आर द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। ये सारे एटॉमिक मासेस कैसे फाइंड आउट किए गए हैं? एक एटम के मास को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके बाय यूजिंग मास स्केल। सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। लेसन थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा ही पार्ट बचा है। सो स्टूडेंट्स, कम टू दिस साइड एंड वी विल अंडरस्टैंड ग्राम एटॉमिक मास। ब्रीफ है, जल्दी ही कर लेंगे। ग्राम एटॉमिक मास, it is also known as gram atom. When the atomic masses are expressed in grams, they are called as gram atomic masses. I say that when atomic masses are expressed in grams, they are called as gram atomic masses. Although this is not the actual definition. What is the actual definition of gram atomic mass? पहले बोर्ड पे देखेंगे और फिर हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। यहां पे इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एन एलिमेंट whose mass in grams is numerically equal to its relative atomic mass. I repeat, quantity of an element whose mass in grams is numerically equal to its relative atomic mass. क्या मीनिंग हुआ इसका? Quantity of an element whose mass in grams is numerically equal to its relative atomic mass. That much quantity of an element whose mass is equal to its relative atomic mass, that much quantity of an element is called as gram atomic mass. लगता है अंडरस्टैंड नहीं किया? दूसरी सेंस में लेते हैं। Suppose I have a container. In that container, I take some oxygen.
स्टूडेंट, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? यस, 16U। तो मैंने एक कंटेनर में ऑक्सीजन गैस ले ली, एटॉमिक मास उसका 16U है, दैट इज नोन टू यू। हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन इन दैट कंटेनर? एग्जैक्टली 16 ग्राम। खुद आइडिया लगाइए, मैंने कंटेनर में ऑक्सीजन एलिमेंट कितना लिया हुआ है? 16 ग्राम। 16 ग्राम is the quantity of oxygen element that I take in the container। और आपको मालूम है 16 AMU ही ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास भी है। तो यहां क्या मीनिंग हुआ कि इस कंटेनर के अंदर दैट मच क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट है which is equal to its relative atomic mass। तो कंटेनर के अंदर अगर सपोज कर लो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है और 16 ही ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, तो वी कैन से दैट इन द कंटेनर देयर इज दैट मच क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर which is equal to its relative atomic mass। so 16 gram will be the gram atomic mass of oxygen। होप करता हूं स्टूडेंट आप अंडरस्टैंड किए होंगे क्यों 16 ग्राम को ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास मानना है, क्योंकि 16 ग्राम ही क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है। 16 ग्राम ही क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन कितना? 16 ग्राम। सो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। So finally I conclude that atomic masses expressed in grams are called gram atomic masses। Gram atomic mass is most appropriately defined as the quantity of an element whose mass is numerically equal to relative atomic mass, and gram atomic mass is also called as gram atom। Here are some examples। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम। यहां AMU यूज ना करें, अगर आपने यहां पे AMU यूज किया दैट विल बी दी रिलेटिव एटॉमिक मास। लेकिन जब आप इन प्लेस ऑफ AMU, इन प्लेस ऑफ U, जब आप यूनिट यूज कर रहे हैं ग्राम, इट विल बी ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। और हम पहले स्टडी कर चुके हैं द ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटम। तो मैं होप करता हूं इस वीडियो को आप रिपीटेडली देखेंगे और रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास अच्छी तरह प्रिपेयर करेंगे। बोरान का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाई एवरेज एटॉमिक मास, this concept is applicable in case of isotopes। नेक्स्ट टॉपिक में हम relative molecular mass फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल मिलता जुलता टॉपिक होगा। एंड बिफोर आई लीव, कैमरा विल बी फोकस्ड एट द बोर्ड फॉर few seconds। You will have to take the screenshot so that you can write down all the things which are there in the board। नोट करें और अपनी नोटबुक बनाएं। थैंक यू। याद है मेरे को लगता है